वेलकम टू AGPG स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप एक्सपेरिमेंट 3 एंड 5 को मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट की भी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Experiment 3. Growing of maize. Maize is the one of the important foods. Maize is one of the important food, green forage and industrial crops of the world. It is called queen of cereals. It is also called queen of cereals. Maize has highest yield per hectare among the cereal crops. Climate. The climate is tropical. The warm humid weather. The optimum pH range of soil from maize is 6.5 to 7.5. 600 mm rainfall with even distribution is sufficient for gold cultivation. Soil, well-drained sandy loam soil with organic matter. Its pH between 5.5 to 8. Sowing time. Kharif season crop. Seed is sowed in the month of February to March. Rabi season crop. Seed is sowed in middle of October to middle of November. Land preparation and manuring. A well-prepared flatbed which has given 4-5 deep plowing on an ideal condition for sowing of crops. The nutrient content FYM or compost 5 ton per hectare, nitrogen 100 to 120 kg, P2O5 60 kg, K2O 30 to 40. Method of planting. Seed treatment. Treatment with Boston 3 gram per kilogram of seed before sowing in the field. Depth of seed 4 to 6 centimeter. Spacing 70 centimeter into 25 centimeter from row to row and plant to plant. Plant density of 66.666 per hectare. A healthy seed of 20 to 22 kg required for cultivation in one lakh of land. Interculture operation. इसमें thinning should be done after 10 days of germination, keeping one plant per hill. इसमें जो thinning इसमें आफ्टर 10 डेज के बाद थिनिंग करते हैं, ज़्यादा एक से ज़्यादा प्लांट एक जगह पे हो तो उसको रिमूव कर देते हैं. At high stage the crop should be earthed up followed by light and weeding. The second earthing up should be done at 60 days after germination of the crop. सेकेंड अर्थिंग अप करते हैं तब मिट्टी चढ़ाते हैं, वो 60 डेज के बाद 60 डेज आफ्टर जर्मिनेशन. इरिगेशन फॉर खरीफ मेज. इरिगेशन एट अर्ली knee high tasseling and 50% silking stage. इरिगेशन इस कंडीशन पे करते हैं जब हमारा प्लांट नी हाई स्टेज पे हो और tasseling and silking stage 50% हो. वैरायटी गंगा हाइब्रिड, मक्का 5, प्रभात, हिमालय 4M4, etc. Intercropping. Growing of one row of soybean in between 2 rows of maize, 60 centimeters spacing, gave increase in yield of maize. से एक रो हमने सोयाबीन की लगाई और 2 रो मेज की लगाई 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे. इससे जो यील्ड होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, बढ़ेगी. The planting of maize alternating every 4 rows of urad bean or black gram. ऐसे मेज की प्लांटिंग में अल्टरनेट मतलब चेंज करते रहते हैं. एवरी 4 rows ऑफ उड़द बीन या ब्लैक ग्राम की लगा सकते हैं 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे.
Harvesting and threshing. Maize is ready for harvesting ever when the stalk is somewhat green, but the cover has dried, and turned brown shell maize when the moisture content range between 10 to मेज की तब हार्वेस्टिंग करते हैं जब स्टॉक ग्रीन हो, लेकिन वो ड्राइड होके ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इसमें मॉइस्चर कंटेंट 15 से 20% तक रहता है, तब इसको हार्वेस्ट करते हैं. कन्वेंशनल हार्वेस्टर कंबाइंस कैन बी यूज फॉर थ्रेसिंग मेज. जो ये हार्वेस्टर होता है उसको थ्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे कि लेबर की कोई नीड नहीं होती है. जब हम लोग डीहस्किंग करते हैं तो उसकी कोई नीड नहीं होती है, इस हार्वेस्टर की हेल्प से हो जाता है. Experiment 4. Sowing of soybean. Soybean can be grown on wide range of soils with better performance under vehicles rise in organic carbon. Soybean is a species of legume native to East Asia, widely grown for its edible bean, which is a rice source of protein and also excellent source of fiber. एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है और एक एक्सीलेंट फाइबर का सोर्स होता है. Soil. It gives good result when grown on well-drained, fertile, loamy soil. pH 6 to 7.5 is favorable for optimum yield of soybean. Land preparation. Prepare field by giving 2 to 3 plowing followed by plunking. 2 to 3 plowing करते हैं इसमें. Sowing. Sowing. Time of sowing. First fortnight of June is best time for sowing soybean. First fortnight means first 15 days of June. Spacing 45 into 4, 7 centimeter depth, 2.5 to 5 centimeter, and sow seed with the help of seed drills. Seed rate. Use seed rate 25 to 30 kg for sowing in 1 acre land. Seed treatment. To protect seed from soil-borne diseases, treat seed with Thydam or Kaptan 3 gm per kilogram of seeds. Nutrient requirements. N. Nitrogen 24 kg per hectare, phosphorus 80 kg per hectare, and potash applied if deficiency observed. Apply FYM or compost cow dung at the rate 10 per hectare. Weed control. Give first having 20 days after sowing, second hoeing 40 days after sowing, to water wheat chemically after sowing within 2 days. Irrigation. Overall crop required 3-4 irrigation. Irrigation at time of bed filling stage is necessary. No irrigation required in good rainfall condition. Overall crop required 3-4 irrigation. Irrigation at time of pot filling stage is necessary. No irrigation required in good rainfall condition. Harvesting. Pods become dry and leaves changes their color to yellow, and fall of it is sign of crop is ready of or harvesting. Harvesting. Harvest the crop with sickle after harvesting. Carry out threshing operation. Experiment 5. Effect of seed size on germination and seedling vigor of Kharif crop. Plant reproduce generally by seeds and asexually by vegetative plants. Plants या reproduce होता है या seeds से या vegetative parts से. Plants which do not produce seed are multiplied with vegetative plants. Sugar cane is planted with stem. Sugar cane जो होता है stem से planted होता है, उसकी stem cutting होती है, उसको sets बोलते हैं.
Forage grasses like napier grass, greenia grass, ora grass, etc. are mainly propagated by stem cutting or rooted slip. Rooted slips are basal. 2 to 3 internodes of the stem with a few roots tubers are used as seed material in potato. मतलब प्लांटेड करने के लिए 2-3 इंटरनोड्स होना चाहिए उसमें. प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए उस स्टेम में 2-3 इंटरनोड्स होना चाहिए. Characteristics of good seed material. Establishing a vigorous crop start with selecting good quality seed. Quality seed ensures uniform crop stand establishment with uniform, vigorous, and population per unit area. Major seed quality characteristics include improved variety. It should be superior to existing ones. Should release its yield potential in the region where it is formed. Improved variety. एक गुड सीड मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो सीड हो वो विगरस हो, जिससे कि वो एक यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड दे सके. एंड मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है इम्प्रूव वैरायटी. मेजर मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है जैसे इम्प्रूव वैरायटी, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, मैच्योरिटी, free from storage pest and seed-borne disease, free from dormancy, uniformity, high percentage of germination. Variability and vigor are the two important character of seed quality. ये जो दो कैरेक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीड क्वालिटी के लिए. कैन बी एक्सप्रेस बाय द जर्मिनेशन परसेंटेज. यही जर्मिनेशन परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं विच इंडिकेट नंबर ऑफ सीडिंग इज डिफिकल्ट टू मेजर. Germination is measured with two parameters: the number of days required to produce a given germination percentage. कुछ दिन लगते हैं germination percentage को produce होने में. And the average number of days required to radicle or plumule to emerge. कुछ दिन लगते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल को इमर्ज होने में, निकलने में. Traditionally, seed used to be sown at sufficiently wet of seed per unit are respective of seed size depending on the seed size. The number of seeds per unit are varies considering test weight of crop seeds for adjustment in seed rate to obtain required population densities. Several conditions. ट्रेडिशनल सीड होते हैं वो ऐसे सोन किए जाते हैं कि वेट में सोन किए जाते हैं. और कुछ सीड साइज पे डिपेंड करता है और वेट ऑफ क्रॉप सीड्स या सीड रेट पे डिपेंड करता है. जो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है सिस्टम में सीड रेट के एडजस्टमेंट में, लेट सीडिंग, poorly drained soil, rough seed bed, party under, compost plant residues, seed with low test weight than normal, low germination percentage, high pest and disease problems, inadequate soil moisture for germination may depend, higher seed rate than recommendation. Relationship between vigor, field performance and yield. The germination ability and vigor of seed lot is directly related to performance in the field. Directly related to the germination ability और vigor of seed. Vigor of seed ये related होते हैं performance, the field के performance से related होते हैं. Seed low in vigor generally produce weak seedling that are susceptible to environment stresses. जो सीड लो इन विगर होगा मतलब कम क्षमता होगी उसमें प्रोड्यूस करने के लिए,
उसका सीडलिंग हुआ बहुत वीक होगा, जिससे कि वो इन्वायरमेंट सब्सिस्टिबल, जो इन्वायरमेंट स्ट्रेसेस से हाई लेवल this high level vigor seeds can be affected to provide an early uniform stand which give the growing seedling the competitive advantage against various environmental stresses. मीन जो हाई लेवल वेगर सीड होगा वो वो कम्पिटिटिव होगा, वो इन्वायरमेंट स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकता है। बट जो सीड लो इन विग होगा वो इन्वायरमेंट स्टेटस को टॉलरेट नहीं कर सकता है, इसके लिए वो सस्टेबल नहीं है। Provides a very good estimate of potential field performance and subsequently the the field planting value. Thank you for watching my video. I hope I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. So let's see experiment 6 in next video. Like, subscribe and share my video.